Hello all, welcome to the new session. So this session is about the Newton-Raphson method of accuracy criteria. So in this session we are going to discuss the step-by-step procedure to solve the numerical of Newton-Raphson method of accuracy criteria. So let's directly move towards the numerical. So here this is the numerical for Newton-Raphson method of accuracy criteria. You can again see the difference between the numerical of iteration and accuracy criteria. So here in case of accuracy criteria numerical, there is a accuracy value is given. So here first read the numerical carefully. Here you can see use the Newton-Raphson method to find the smallest root of equation e raised to x minus sin x is equal to 0. That means the function is given in the numerical. And next is to 4 decimal accuracy. So here the accuracy value is also given. You have to check up to the 4 decimal accuracy. So मैं आपको बताऊंगा 4 decimal accuracy का मतलब क्या होता है. Now here the initial guess is also given in the numerical, that is assume the initial guess is -3, that is x1 is equal to -3. This is given in the numerical. So here you can see no number of iterations are given in the numerical, so that's why this numerical is of accuracy criteria, because here the value of accuracy is mentioned, right? So here first write down the given data as always. So given is function is given in the numerical, so write down the function f of x is equal to e raised to x minus sin x is equal to 0. ये आपको न्यूमेरिकल में दिया है. Now the value of accuracy is also given in the numerical, but you have to see the 4 decimal accuracy is mentioned. So how to write down the 4 decimal accuracy? So the value of accuracy is equal to 0.0001. मतलब पॉइंट के बाद 4 डेसिमल, तो इसको कहते हैं 4 डेसिमल एक्यूरेसी. अगर यहाँ पे 3 डेसिमल एक्यूरेसी बोला होता तो हम कंसिडर करते हैं एक्यूरेसी की वैल्यू 0.001. बट हियर 4 डेसिमल इज मेंशन इन द न्यूमेरिकल, सो द वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी इज 0.0001. मतलब पॉइंट के बाद 4 decimal, right? Now the initial guess is also given, that is x1 is equal to -3. So here again one more important thing you have to remember here. जो लास्ट में भी मैंने आपको बताया था, whenever there is a trigonometric term in the function, you have to convert your calculator into radian. Now here again the initial guess is given in the numerical, so no need to satisfy the conversion condition. Now you know the conversion condition for Newton-Raphson method. लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूटन-रैप्सन मेथड ऑफ इटरेशन क्राइटेरिया, उसमें हमने कन्वर्जन कंडीशन देखा था. So here the conversion condition, you can see here the conversion condition is f of x1 or f of x multiplied by f double dash x divided by f dash x bracket square is less than equal to 1. ये conversion condition है. बट ये कब आपको यूज करना है? जब हमें इनिशियल गेस नहीं दिया हुआ रहता है और हम वो इनिशियल गेस अज्यूम करते हैं, और वो इनिशियल गेस अज्यूम करने के बाद आपको वो चेक करना होता है वेदर दिस इनिशियल गेस इज करेक्ट और नॉट. तो वो हम कैसे चेक करते हैं? बाय सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो दैट मीन्स द इनिशियल गेस इज करेक्ट. बट हियर इन दिस न्यूमेरिकल द इनिशियल गेस इज ऑलरेडी गिवन, सो नो नीड टू सेटिस्फाई द कन्वर्जन कंडीशन. कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको स्पेसिफिकली पूछा जाता है इनिशियल गेस देने के बाद भी कि आपको इनिशियल गेस चेक करना है, तो उस केस में उस न्यूमेरिकल में आपको वो कन्वर्जन कंडीशंस लिखना पड़ेगा, राइट? सो ये बात आप मतलब क्लियर समझ लो कि आपको ये 2-3 तरीके से ये पूछा जा सकता है. नाउ हियर इन दिस न्यूमेरिकल नो नीड टू सेटिस्फाई द कन्वर्जन कंडीशन, यू कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द इटरेशन नंबर फर्स्ट, right? So here you can see for the iteration number first we have to calculate the f of x and f dash x. So f of x तो हमें already दिया है, right? So f dash x हमें कैसे calculate करना है? By differentiating the function f of x
विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको f डैश x मिल जाएगा, राइट. सो हियर राइट डाउन f ऑफ x इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन. और f डैश x हमें कैलकुलेट करना होगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा e रेस टू x माइनस cos x, right? So e raised to x minus cos x, this is the equation number second. Now here no need to find out the equation for f double dash x, क्योंकि f double dash x हमें बस ये कॉन्वर्जन कंडीशन के लिए लगता है, बाकी आगे जाके f डबल डैश x की इक्वेशन का कोई हमें यूज नहीं है, राइट. तो ये थोड़ा आपको समझ के करना है ताकि आपका टाइम भी बचे. So here only we require these two equations. First f of x, which is already given in the numerical, and f dash x you can calculate by differentiating the f of x with respect to x, right. So here we have now this equation. So directly move towards the iteration number first. Iteration first, right. So for iteration first, we have an initial guess, that is x1 is equal to minus 3, which is already given in the numerical. So using Newton-Raphson formula, what is the formula? x2 is equal to x1 minus f of x divided by f dash x. Now you can see here only f of x is required and f dash x is required. No f double dash x we have to use anywhere, right. So that's why no need to calculate f double dash x, because आपका जो जितना टाइम है वो भी आपका बचेगा और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, right. So here after calculation you can calculate, that is minus 3 minus, आप अगर f डैश x कैलकुलेट करना होगा आपको, मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ. f डैश x को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहीं पे मैं अगर लिखता हूँ तो e रेस टू माइनस 3, क्योंकि जस्ट हमें ये x1 की वैल्यू बस इस इक्वेशन में पुट करना है, हमें f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी. एंड माइनस साइन माइनस 3, तो हमें f ऑफ x मिल जाएगा. सो हियर द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 0.1909. 0.1909. Similarly, calculate the value of f dash x. So e raised to minus 3 minus cos minus 3 is equal to, ये आपको मिलेगा 1.03977, राइट. तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, जैसे x1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश x. तो f ऑफ x इज 0.1909 and f dash x is 1.03977. So calculate this, you will get the value of x2. So here the x2 is minus 3.1835. So this is the value of x2. So here you have to directly write down, replace x1 by x2, right. But here this is for next iteration. Now here you have to check for the accuracy, right. So accuracy check करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है accuracy के लिए? check for accuracy, and here the condition for accuracy is again mod of x2 minus x1 is less than accuracy, right. So here हमारे पास x2 की वैल्यू है जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है, that is minus 3.1835.
1835 माइनस x1 की वैल्यू क्या थी प्रीवियस हमारे पास -3। सो -3 लिखो और इसको चेक करो ये एक्यूरेसी से कम आता है या नहीं। एक्यूरेसी की वैल्यू कितनी है हमारी 0.0001 4 डेसिमल तक, राइट। तो ये वैल्यू आपकी आती है आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ दिस x2 माइनस x1 टर्म। दिस वैल्यू इज 0.1835, so which is greater than the 0.0001, so the condition is not satisfied, right. So after finding out that the condition is the accuracy condition is not satisfied, you have to move towards the iteration number next. iteration iteration second, राइट। नाउ फॉर इटरेशन सेकेंड हमने ऑलरेडी रिप्लेस किया है, जो यहाँ पे हमने लिखा था देखो यहाँ पे हियर x2 हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिप्लेस x1 बाय x2, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो रिप्लेस x1 बाय x2 for next iteration. So the value of x1 is equal to minus 3.1835, right. So here for next iteration the x1 is equal to minus 3.1835. again use the formula for Newton-Raphson method. x3 is equal to x1 minus f of x divided by f dash x, राइट। x1 भी बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि हम अल्टीमेटली ये x1 की वैल्यू पुट करते हैं, राइट। सो f of x1 one in both are same, right. So here again x1 we have value of x1 that is minus 3.1835 minus here again we have to calculate the f of x1 and f dash x1. so कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास दोनों इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस में हमें ये x1 की जो नई वैल्यू है वो पुट करनी है, हमें आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन हियर यू कैन, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप उसको कैलकुलेट कर लेना सेकेंड इटरेशन के लिए। सो डायरेक्टली हियर द वैल्यूज आर f of x is minus 0.000457 divided by f dash x की वैल्यू है 1.0405। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा x3 का वैल्यू। x3 का वैल्यू आपका आता है सेकेंड इटरेशन के लिए -3.1836, राइट। ये वैल्यू आपका आएगा सेकेंड इटरेशन के बाद। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस अगेन यू हैव टू चेक फॉर द एक्यूरेसी चेक। एक्यूरेसी की कंडीशन x2 माइनस x1 इज लेस देन 0.0001। अभी x2 मतलब ये x3 रहेगा, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे इसे x2 इज इक्वल टू x3 भी बोल सकते हो। मैंने आपको समझने के लिए x2 x3 x4 ऐसे करके जा रहा हूँ, आप रिपीटेडली x2 ही यूज कर सकते हो या वो भी यूज कर किया तो चलेगा, राइट। सो हियर अगेन पुट द वैल्यू x2 इज इक्वल टू माइनस 3.1836 माइनस x1 कितना था लास्ट माइनस 3.1835 minus 3.1835. Here calculate this 0.001 से कम आना चाहिए, राइट। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आती है 0.0004, right, which is again greater than the 0.0001. So condition is
not satisfied, right? So if the condition is not satisfied, again move towards the next iteration, and for next iteration again you have to write down replace x1 by x3. So new guess is x1 is equal to x3 का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था लास्ट इटरेशन में, माइनस 3.18306, तो वो होगा आपका नेक्स्ट इटरेशन के लिए x1 का वैल्यू माइनस 3.18306. दिस इज द वैल्यू ऑफ guess for iteration number third. So move towards the iteration number third. Iteration third, right? Again x1 is equal to minus 3.18306, जो कि हमने रिप्लेस करके नया लिया था. Now again use the formula for Newton-Raphson method. So here x4 is equal to x1 minus f of x divided by f dash x. Now you know how to calculate the f of x and f dash x by putting the value of this x1 into this equation, into the equation of f of x and f dash x, right? So here calculate again. You can see here x1 का वैल्यू माइनस 3.18306 माइनस f of x आपको मिलेगा 0.000000313. देखो आपको ये कैलकुलेट करके देखना है, एंड f dash x इज 1.0405, right? So after calculating this you will get the value of x4, right? So the x4 is minus 3.18306, right? This is the value of x4. Now after calculating the value of x4, again check for the accuracy. Check for accuracy. The condition is x2 minus x1 is less than 0.0001. अभी x2 मतलब ये x4 रहेगा, right? So here again minus 3.18363 minus 3.18306. ये कैलकुलेट करो, ये 0.0001 से कम आना चाहिए, एंड द वैल्यू इज 0.000003, which is less than the 0.0001. Condition satisfied. Condition satisfied. So after finding out that the condition of accuracy is satisfied, मतलब ये 0.0001 से जो कम आ रहा है, उसके बाद जो रूट्स ऑफ इक्वेशन होगा वो आपका होगा फाइनल रूट ऑफ इक्वेशन. सो दिस इज द फाइनल रूट ऑफ इक्वेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी, राइट? तो यहाँ तक. इसके बाद आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन आपको एक स्टेटमेंट लिखना है उसके आगे. सो हियर the root of equation for given value of accuracy is minus 3.18363. So this is the final answer, right? So इस तरीके से आपको एक्यूरेसी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, राइट? सो जब तक आपका एक्यूरेसी का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाता
तब तक आपको इटरेशन कंटिन्यूसली करते जाना है। नाउ इन केस ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आपके थर्ड या फोर्थ इटरेशन में आपको एक्यूरेसी का भी आंसर मिल जाता है, राइट? So here this is the step by step procedure to solve the numerical of Newton-Raphson method of accuracy criteria. I hope आपको अभी इसके बाद कुछ डाउट नहीं रहेगा. If still you have any doubt, you can ask me in comment box. So मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे आंसर्स देने की कोशिश करूँ, राइट? So thank you for the watching guys.